समस्त को ये भिडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज भिडियो में आप सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 2 बा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2 यूनिट 1 जहाँकि डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस समस्त इंपोर्टाट 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर नोट्स आपन शेयर करी आ वीडियो आगे मुझे कहबी आप पीडीएफ नोट्स टी कि पाइबे। तो चलो स्टार्ट करवा। तो फास्ट टाइम देखा किसी 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट कौन जनमंगल राष्ट्र कौन आम सब जानते आगे डिस्कसन करदे। द वेलफेयर स्टेट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज अ स्टेट दैट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रोवाइडिंग बेसिक इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी टू सिटीजन। तुम जानते गोटे जनमंगल काले राष्ट्र मुख्य कौन प्रोवाइडिंग कर्तव्य रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ना तार सिटीजन मान गोटे भल इकोनॉमिक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देवा नागरिक मानू। इट प्रोवाइड्स द वेलबीइंग ऑफ इट्स सिटीजन। वेलफेयर स्टेट रिगार्ड इटसेल्फ एज एन एजेंसी ऑफ सोशल सर्विस रेदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। से कौन कर निजक गोटे सोशल सर्विस रूपे लोक प्रकाश कर ना कि गोटे इंस्टीट्यूशन पावर रूपे। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन था जो सिद्धांत ना समस्त को समान सुजोग आउ जो नेचुरल रिसोर्स रही समाने कौन भाग करवा एंड पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी लोक मानकर उत्तरदायित्व। व्हाट इज ट्राइबल वेलफेयर? तो ट्राइबल डेवलपमेंट इज primarily concerned with the socio-economic development to be accomplished in systematic, phased, time-bound and integrated manner. The tribal welfare planning and implementation are related to various issues at national, state and local level. तो जो ट्राइबल वेलफेयर मध्य रिलेटेड थाए जेपरिक आम नेशनल हो पारे, स्टेट हो पारे और लोकल लेवल रे द क्रुशियल एजेंसी दैट प्लेस ए विटल रोल इन ट्राइबल वेलफेयर। तो ट्राइबल वेलफेयर रे किसी क्रुशियल एजेंसी थाए जो मैंने कि गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करती प्लेस निभाती इन ट्राइबल वेलफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? तो इंडियन प्लानिंग कौन था? द प्लानिंग इन इंडिया इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पज जेपरिक बैलेंस ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट टाइम देखा डिस्कस डेवलपमेंट इन इंडिया 1947 टू 67। तो 1947 रु 67 बा 47 टू 67 मध्य कौन कौन डेवलपमेंट होता इंडिया रे ना विकास डिस्कस करवा। द पार्टीशन ऑफ इंडिया गेव वे टू टॉप रेफ्यूजी प्रॉब्लम। यही सब कौन रेफ्यूजी प्रॉब्लम रे भाग नहीं आ पूर्व आम देखते DSE 1 रे रेफ्यूजी डिस्कसन करते यूनिट 4 रे जो मैंने देखना से जाए प्लेलिस्ट चेक करेंगे। टेंशन अक्वेड विथ पाकिस्तान ओवर द डिविजन ऑफ एसेट्स जो आम जो भाग है टेंशन थी ये। There was also widespread of poverty existed, so the national government had to take immediate measure to solve these problems. Under Nehru Mahalanobis strategy, India state was to take responsibility for the provision of infrastructure as well as large heavy industrial investment. Next time देखिए डेवलपमेंट इन इंडिया 1960 to 1990। तो 1960 in the crisis in the economy in the mid 1960 was event in the form of food crisis and devaluation of rupee followed and planning was to be suspended for 3 years. The land reforms measures had received patent success at that time. Poverty alleviation program like OPAP, DWCRA were launched। ये सब कौन OPAP DWCRA लॉन्च होता तो पर आसपे ये सब के लॉन्च होता। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर politics of nomination, marketization of policy became the feature between 1980 to 1990. What is it? 20-point program? 20-point program कौन? 20-point program was announced by श्रीमती गांधी in January 1982। 1982 जनवरी श्रीमती गांधी द्वारा 20-point program कौन अनाउंस होता। इट एम टू एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी को आम कि सब क्षेत्र में डेवलप विकास कर। द प्रोग्राम फॉर्मड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द 6th 5-year प्लान। हाउएवर द then प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी restricted the plan as a 20-point program 1986। it came into effect from 1st April 1987। it added to late emphasis on the eradication of poverty। ओके दारिद्र्य दूरीकरण कथा आहार लेट था एम्फासिस। ओके
राइट अबाउट द डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्पेस तो इंडिया हैज कंप्लीटेड 74 इयर्स तो आप बर्तमान कैलकुलेट करूँ इट हैज डेवलपमेंट इन फॉलोइंग जेपरिक इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट इज सोशल वेलफेयर तो सोशल वेलफेयर कौन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एम्ड एट एस्टाब्लिश वेलफेयर स्टेट जो जन्म सामाजिक जो आम जन्मूल करती प्रोग्राम गुड़िक आम कौन निजर स्टेट को वेलफेयर करते ये टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रेन वुमेन हैंडीक्राफ्टेड द ओल्ड एंड द इनफ्री द 5 year प्लान इंक्लूड द स्पेशल प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर दिस पीपल जो 5 वर्ष जो था विकास किसी प्रोग्राम लॉन्च करते मेनी ऑफ प्रोग्राम लाइक 20 पॉइंट प्रोग्राम चाइल्ड एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स रिजर्वेशन सिस्टम फॉर वुमेन एंड हैंडीक्राफ्टेड program for the care and grant in aid to voluntary agencies were adopted by the government to secure social welfare. Next time देखिबा what are the main failures of Indian economic planning. The following are the main failures of Indian economic planning. It failed to control the price rise. The plans failed to solve the unemployment program problem. Inequalities in the distribution of income and wealth have increased. The plan failed to eradicate poverty in the country. The quality of the delivery of the government service remains poor. Next time देखिए what are the objective of planning of India. The objective of planning of India are to achieve the goal of economic development, better utilization of manpower and create employment opportunity. It tries to bring economic stability आर्थिक कौन stability कहीपर जे आर्थिक स्थिरता ओके इट ब्रिंग सोशल वेलफेयर एंड सर्विसेज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लानिंग तो ये सब प्लानिंग थिला इंडिया ये सब इजी लैंग्वेज तो आप कौन आम सब ब्रीफली डिस्कसन करदे आप सहित व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लानिंग तो प्लानिंग कौन स्टैटिस्टिकल आइडिया गोटे आइडिया करा पड़ो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया पड़ो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन दरकार कोऑपरेशन ऑफ द पीपल लोक सहयोग दरकार ना अपन प्लानिंग ओके राइट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमिशन तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमिशन प्राइम मिनिस्टर थे कौन प्लानिंग कमिशन गोटे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भाई डेप्यूटी चेयरमैन इज द फैक्टो चेयरमैन ऑफ द कमिशन द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्लानिंग मिनिस्टर आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिशन ओके द कमिशन हैज फोर्स टू 7 फुल टाइम मेंबर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक इंडस्ट्री साइंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द कमिशन हैज द मेंबर ऑफ सेक्रेटरी हु इज यूजुअली ए आईएएस ऑफिसर तो सेक्रेटरी की रहा आईएएस ऑफिसर रही व्हाट इज नीति आयोग नीति आयोग हम जानते 2014-15 पर लागू है तो द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड नीति आयोग इट वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 2015 नीति आयोग इज द premier policy think tank of the government of the India. It provides both to directional and policy inputs. It also provides relevant technical advice to the center and the state for strategic design and long-term policy and programs of the government. Next time देखिए what are the main differences between Niti Ayog and the Planning Commission of India. The main difference between the two bodies are Planning Commission had the power to allocate funds to minister and states, but Niti Ayog is essentially a think tank and truly advisory body. Niti Ayog truly advisory body. Okay. The role of the state in area planning commission was limited, but all states play a greater role in planning and implementation of policies under Niti Ayog. The role of states in the planning commission was limited. The states annually needed to interact with the planning commission, but Niti Ayog has all chief ministers of states and expected to have a greater role in the planning and implementation of a policy. Next time देखिए what are the elements of liberalisation in India. तो liberalisation India एलिमेंट कौन है तो डीलाइसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज लिबरलाइजेशन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन लिबरलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन. नेक्स्ट टाइम देखिए व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन तो द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू द कंट्री द स्टॉक मार्केट वैल्यूज राइसेस बाय लिबरलाइजेशन द कंट्री लेसन्स पॉलिटिकल रिस्क टू इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन फॉर इन्वेस्टर्स इम्पैक्ट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर तो सब क्षेत्र में लिबरलाइजेशन को भल रही है. व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन तो डिस्टेबलाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई इन बैंकिंग सेक्टर देयर इज ए थ्रेट फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज माने मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा कौन थ्रेटर संभावना थिला. टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द मार्केट इकोनॉमी विभिन्न प्रकार कंपनी मर्ज होतिला. ओके व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन रो चीफ फीचर्स कौन थिला तो देखिबा
तो द चीफ फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर स्पीडी इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, reducing the fiscal burden of the government, increasing the role of private sector and reducing of the role of public sector, increasing the management of enterprises। तो आगे कौन था हम जानते पूर्व सब किसी आम कौन गवर्नमेंट अंडर थी बर्तमान प्राइवेट होगा सब किसी एयरपोर्ट होगा सब अन्य सब सेक्टर आप जानते कमेंट करते आप सब कमेंट करते कमेंट कला आप सब कौन ये सब भावे ओके। तो प्राइवेटाइज होगा बर्तमान देखिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट कौन कौन रहा। तो द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर इंप्रूव इफिशिएंसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, शॉर्ट टर्म व्यू, इंक्रीज कंपटीशन द मार्केट कंपटीशन नहीं गोटे जिनस भल हो पार, इंक्रीजिंग इन ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वैदेशिक जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन देख सब क्षेत्र में भल रही सुगुण रही दुर्गुण रही। तो से प्रकार डिसएडवांटेज कौन कौन रही ना प्राइवेटाइजेशन हैज ए नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस जेपरिक इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरियस प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ नेसेसरी प्रोडक्ट, इट एम्स एट प्रॉफिट मेकिंग, इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्राइवेट कंपनीज ओनली हैव देयर ब्रांचेस इन सिटीज एंड देयर बाय रूरल एरियाज आर नेग्लेक्टेड। तो सब क्षेत्र में किसी क्षेत्र में तार दुर्गुण देखागला। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कौन ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सचेंज अमंग नेशन, इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड माने जो होल वर्ल्ड रे ओके। द सेंट्रल फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीज फ्री ट्रेड एमंग नेशन, जो नेशन आम कौन फ्री ट्रेड कर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओके। Globalization is a long-term process of change towards greater international cooperation in economics, politics, idea, culture, values, and exchange of knowledge. What are the merits of globalization? Globalization कौन merit थिला। तो the merits of globalization it creates employment opportunity, there is a development in transport and communication, economic growth and consumer satisfaction, enhanced GDP, development in information technology, transportation, communication। अब ठीक से पर कौन हम नेगेटिव इम्पैक्ट बा डिमेरिट। तो इट क्रिएट्स रिस्क टू हेल्थ, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इनइक्वालिटी, डेंजर टू इन्वायरमेंट, मोनोपोली ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलपमेंट कंट्री मोनोपोली चलाइले ग्लोबलाइजेशन जो। तो ये किसी 3 मास क्वेश्चन आंसर यूनिट 1 जो मैंने कि नोट्स चाहे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे देछि आपण मैंने जॉइन होगी नोट्स डाउनलोड करेंगे। थैंक यू टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम यूनिट 2 जहाँकि डेवलपमेंट स्ट्राटेजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर रे ताहाको डिस्कशन करिबा मैं नोट्स आप शेयर करेंगे।